हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉस पे। तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग इस बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? A negotiable instrument is a signed document that promise a payment to a specific person or assignee. In other word, we can say it is a formalized type of IOU. IOU. Okay. A transferable signed document that promise to pay a bearer a sum of money at a future date or on demand. सो बेसिकली क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि एक जो आप जैसे ड्रॉर है वो साइन करके चेक देता है ड्रॉई को, और वो उस चेक को प्रॉमिस करता है कि आपकी पेमेंट है जो आपकी लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में ये चेक इशू कर रहा हूँ और आप इसको विड्रॉ करा के अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो what is a key element or key takeaways in this? So a negotiable instrument is a signed document that promise a payment to a specific person or assignee. सो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक साइन डॉक्यूमेंट लाइक हम लोग कह सकते हैं एक चेक देता है एक स्पेसिफिक पर्सन को और या असाइनी को कि आपकी पेमेंट के अगेंस्ट में चेक इशू कर रहा हूँ, आप इससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, इससे अपना पैसा ले सकते हैं। So negotiable instruments are transferable, which allow the recipient to take the funds as cash, then use them as preference. और negotiable instrument transferable होते हैं जो कि अलाउ करते हैं रिसिपेंट को कि वो फंड्स को निकाले, कैश में निकाले और उनको फिर जो भी उसको प्रेफरेंस लगे उस वे में वो उसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड चेक, मनी ऑर्डर एंड प्रोमिसरी नोट्स। सो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल हैं वो आपके चेक होते हैं या फिर मनी ऑर्डर होते हैं या फिर प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। ओके, सो अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं सेक्शन 138 के बारे में इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो आई हैव हियर द like where act section 138 for you. So dishonor of the check for insufficiency एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। सो बेसिकली अगर आपके अकाउंट में इंसफिशिएंट फंड्स हैं या फिर अदर रीजन उसके कारण आपका चेक डिसऑनर होता है, then this section is applied. Okay, so let's see what is there. So where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for a payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part or any debt or liability is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to the owner of check, or that is exceed the amount arranged to be paid from the account by a agreement made with the bank. Such as person shall be deemed to have commit an offense and shall, without prejudice to any other provision of this act, be punished with the imprisonment for a term which may be extended to 2 years, or with fine which may be extended to twice the amount of the check, or both, provided that nothing contained in this section shall apply unless। और इस सेक्शन में यही है कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है बिकॉज आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं या फिर जो आपकी लिमिट है वो एक्सीड हो गई है, और जो आपकी लाइबिलिटी है लाइक होल और मे बी इन पार्ट आप किसी डेब्ट या लाइबिलिटी के लिए चेक दिया है और आपका चेक अनपेड रह जाता है, वो पेड नहीं होता बिकॉज ऑफ दीज रीजन कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपकी लिमिट एक्सीड कर गई और विदाउट प्रेजुडिस हुए हुए अगर ये सब हुआ है सो आपने ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज द ऑफेंस ऑफ। ओके, और इस ऑफेंस में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर आपको फाइन हो सकता है जितने का आपने चेक हुआ है उसके डबल अमाउंट का, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके, सो देयर इज अ प्रोविजन, लेट्स सी।
The check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date on which it's drawn or within period of the validity whichever is earlier. So first इसकी जो आपकी प्री रिक्वायरमेंट है कि आपका चेक जब आप बैंक के सामने रिप्रेजेंट करते हैं वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर जो उसमें डेट लिखी है जो भी पहले आती है उसमें आप उसको चेक को बैंक में सबमिट कराएंगे. The payee or the holder in due course of the check, as the case may be, make a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the recipient of the information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid. अगर आपको चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया है कि दिस चेक इज रिटर्न बिकॉज ऑफ दिस रीजन, देन विद इन 30 days आप उनको नोटिस देंगे रिटर्न में कि आपका जो चेक है वो डिसोनर हो गया है. नाउ योर लायबिलिटी इज देयर, यू कैन मेक द पेमेंट. ओके. एंड द सी द ड्रॉवर ऑफ सच चेक fail to make the payment of the said amount of the money to the payee or as the case may be to the holder in due course of check within 15 days of the recipient of the said check. So अगर ड्रॉवर ऐसे चेक लाइक उसके 15 दिन मतलब उसको नोटिस मिलने के बाद में भी अगर पेमेंट करने में फेल होता है तो इस केस में वो फिर सूट फाइल कर सकता है. Explanation: for the purpose of this section, debt or other liability means the legally enforceable debt or other liabilities. So इस section में जहां हमने बोला है debt or liability, that means you have the legal contract or you have the enforceable debt, like legally enforceable debt आपने उसको दिया है, और other liabilities. So this is the legal liability. It's not like you have an illegal liability. आप उसको हफ्ता मांग रहे हो तो उसके लिए आप उसके ऊपर केस कर दें. No, not at all. This is like the legal liabilities there. आपने इनवॉइस रेज किया है, कोई उसका बिल पेंडिंग है, आपसे उसने कुछ सामान लिया है या कुछ भी है इस तरह की, तो उसके लिए उसने चेक इशू किया था, उसकी लायबिलिटी बनती थी. दैट इज एनफोर्सेबल, लीगल एनफोर्सेबल डेब्ट. ओके. दैट इज नॉट लाइक एन इनलीगल डेब्ट. दैट इज नॉट गोइंग टू कवर अंडर दिस सेक्शन. So negotiable instrument in many jurisdiction including India, the dishonor of check due to insufficiency of fund is a criminal offense governed by the specific legal provision. In India, the relevant law is found in the Negotiable Instrument Act 1881. The Act provides a legal framework for use and transfer of negotiable instrument, including checks. Okay. So section 138, offense of dishonor of check for insufficiency of the funds. Check issue for dishonor of debt or other liability according to section 138. If a person issue a check to discharge a debt or other liability and the check is dishonor due to insufficient fund, or if it is exceed to amount arranged to be paid by the drawer's account, the drawer can be held criminally liable. Notice to drawer: the payee, the person whom the check is issued, must give notice to the writing to the drawer, the person who issued the check, within 30 days of the receiving information regarding the dishonor of the check. The drawer then has 15 days from the receipt of the notice to make the payment. Okay. And drawer's failure to payment, अगर drawer fail हो जाता है payment में, so if the drawer fail to make the payment within a specific period, the payee can file a criminal complaint. The drawer can punish with the imprisonment for the term that may be exceeded for 2 years, or with a fine, or that may be exceeded to the amount of the check, or both, with both. Okay. Now I'll just let you know there is a section 139, presumption in favor of holder. So the presumption of the debt, the section 139 create a legal presumption that unless proven otherwise, the holder of a dishonor check receive it for the discharge in whole or part or a debt or other liability. So इसमें क्या है, जिसने चेक डिसोनर, जिसके चेक डिसोनर हुआ है ने, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उसको चेक इसलिए दिया गया है क्योंकि जिसने चेक दिया है उसकी लायबिलिटी बनती थी, उसके ऊपर इसका डेब्ट था और उसको पेड करने के लिए इसने चेक दिया है.
कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये इस तरह से है। Section 142 Cognizance of offense. Cognizance by the magistrate. Section 142 outline the procedure for the filing of complaint and the cognizance of the offense. The complaint must be filed in a court that has the jurisdiction over the area where the drawer reside or maintain an account. Section 143 Power to prescribe future provision. Power to prescribe future provision. The section empower the central government to prescribe additional provision for the purpose of dealing with the dishonor of the check. Okay, so this is all about it, and thank you for watching the video. If you like, please like, comment, share, and subscribe the channel. Thank you very much. Have a good day.